Hello everyone. Hello everyone. Now before proceeding further, we are studying some basic concepts of SOM. In solid mechanics, we have two types of studies. First one is engineering mechanics, and second one is SOM, or either we call this material of solid. In engineering mechanics, we study about rigid bodies, and in SOM we study about deformable bodies. What are rigid bodies and what are deformable bodies? We will look forward for it. Like in mechanics, a very popular problem, ladder problem. You can relate. You can relate this with it. That in ladder problem, you never study that how this ladder will bend or something else. You only study its translational or rotational motion. That body as a whole is moving like this. Body as a whole is moving, not like deforming the body. I can't deform this pen because it will break. uh, so in this rigid body, it is called rigid body. So and in SOM we study about deformable body मतलब जो मुड़ सके, जिसमें थोड़ा deformation possible हो. Like in this like in deflection chapter में जैसे if you remember that original shape is this and deformed shape if on cantilever beam a point load is acting at the end, then deformed shape is this. We here we are not studying rigid body motion means body is deforming, like if it is going thoroughly from this end to this end like this it will move, or like this it will move. It is not a rigid body motion. Like in this example, this is if you apply a point load here, this will go in rigid body motion. The total body will rotate, not deform. If you like in this case, for example, a simply supported beam, if you apply a load here, this body will deform. That stresses will develop because it will resist the motion. It will when we apply load here, like a simply supported beam, when we apply load here, it will resist the motion, not simply that it will go down. But in, like for example, like in this example, it's an internal hinge. If you apply load here, it will simply rotate and will not offer any resistance. This is called rigid body motion. And now for particular study, for definition, for definition, we can see that rigid body, what is rigid body and what is deformed body. In rigid body motion, if these are 2 points, let's say A and B, and before applying load, distance between these points are L, then after applying load also, distance between them will also L, means it will remain constant. Okay, like this body, like this in two ends of this pin are fixed. You can't you before applying this distance, let this is 15 centimeter, and after applying load also this distance is also 15 centimeter, and no change. If it will be deformable body, it will shift slightly downward or something else. It will deform, not like before applying force OA and after applying force. Distance between 2 points is not same. That is called deformable body. Body deforms. Okay, that's these are some basic topic. Before going further in principal stresses, we have to discuss it for better understanding. Like stress strain diagram, as you all might know that Bising sir is taking class online on YouTube made easy. You can go through stress strain diagram by taught by him. I will also cover it later, but as for now my concern, for further proceedings, I have to tell you some things.
This is stress strain diagram. I think everyone is aware of it. This is this is your proportional limit. This is your elastic limit, and all other points you know, I think. Here strain is 0.12%. In SOM, generally my why I am showing this to you, because I just want to say that our point of study, our concern here in SOM and structure is just up to point B. Here I mentioned that SOM study up to this region only. We don't go beyond this, because we in SOM we just assume that it deflect or deform very slightly. Okay. सो इफ हालांकि हम ऐसे माने अगर देखें तो यहाँ पर जो है हम लेते तो ए पॉइंट तक ही है. ए पॉइंट मींस क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल पॉइंट नहीं है, लेकिन सिंस यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है, तो हम ए और बी पॉइंट, सिंस दे आर वेरी क्लोज, वी एज्यूम इट दैट वी स्टडी सोम अप टू पॉइंट बी. ओके. And for your kind information, in upper yield point and lower yield point we get only in mild steel, not any other material, because due to slipping of carbon atom. If anyone asks you, this is actually part of material science. I'm just saying to tick the objectives. Okay. Here I have written only if small deformation is considered. These are just, I'm showing, are just assumptions of SOM. Okay, I'm going briefly through it so that you can further know further proceedings. Okay. Like this, if you remember this formula, simply supported beam, a point load is applied, and delta equal to PL cube by 48 EI. This how we derived. This is derived by considering that deformation is small. When we go in deflection chapter, we will derive. If we will derive it, I will make you recall here. So keep this point in your mind. Okay. Like it is 12th standard, I think 11th or 12th standard, we have read 1 by r equal to d square by dx square, and 1 plus dy by dx square whole square by power 3 by 2. This I don't think you people need derivation of it, because it is the 11th or 12th standard concept. Okay. Then for a small deformation, dy by dx is equals to 0. We neglect it. Then we can write 1 by r equal to d square by dx square. Okay. Then in this formula also, from this formula we can say that m by ei equal to d square by dx square. M by ei, actually in this formula also we have assumed that very small deflection. Okay. But in actually this I am briefing just that small deformation is taken. When further you proceed in deflection chapter and in bending moment chapter, in bending stresses chapter, we will further look that how these are used in derivations. Okay. Like if anyone asks that in rubber you can't apply this so too much, because its delta is very large deflection. Okay, so SOM is just rounding about small deflection, and one benefit of it is that in small deflection, like I have written here, in small deformation, up to elastic limit, only superposition will be applied. Why? You have to ask question by yourself that why it is so said. Like in elastic limit, you know that if we load body will elongate, and if we unload, body will shrink. Then then this is example you need to understand in Hindi. So I am telling this you in Hindi. Okay, be comfortable. जैसे मान लो यहाँ पे इलास्टिक लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेके इलास्टिक लिमिट है, ये इलास्टिक लिमिट के बाद का पॉइंट है. ओके, ये इलास्टिक लिमिट के बाद का पॉइंट है. तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जैसे लोड बढ़ा रहे, लोड 2 किलो न्यूटन हमने लगाया, 1 mm डिफ्लेक्शन आया.
हमने फिर 3 किलो न्यूटन लोड बढ़ाया तो फिर 0.5 mm और आया, और लोड बढ़ाएंगे और आएगा, तो ये इलास्टिक लिमिट तक जाएंगे। तो अब मान लो हमने इस 2 किलो न्यूटन लोड को यहीं रखा रहा और हमने 3 किलो न्यूटन लोड को रिमूव किया, तो 3 किलो न्यूटन लोड को रिमूव किया तो जितना लोड रिमूव किया उतना फिर जो डिफ्लेक्ट हुआ था उतना फिर वापस आ जाएगा, फिर हम लगाएंगे तो फिर वापस आएगा। तो मतलब हम इंडिविजुअल का इफेक्ट यहाँ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी सेम अमाउंट से रीगेन रीगेन कर ले रही है या डिफॉर्म हो जा रही है बार बार लोड लगाने से। बट इलास्टिक लिमिट पॉइंट के बाद हमें ये पता है कि उसके आगे वो रीगेन रीगेन नहीं कर पाएगी, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएगा। तो डिफॉर्मेशन रह जाएगा तो लोड प्रोपोर्शनल नहीं रह जाएंगे वहाँ, लोड वहाँ प्रोपोर्शनल नहीं रह जाएंगे डिफ्लेक्शन के, तो इसलिए हम वहाँ सुपर पोजिशन नहीं लगा सकते। अगर इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो मैसेज करेगा, आई विल क्लियर इट सेपरेटली। आई थिंक मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। नाउ वी डन विथ सम बेसिक, नाउ आई एम कमिंग टू पॉइंट। डोंट वरी, वी आर फर्दर, वी विल गो टू द प्रिंसिपल स्टेज आई थिंक इन दिस lecture. But before this, further we have to understand what is stress. अब stress is just not I think pressure. Well, pressure means press, like you can, pressure is always compressive in nature, that blah blah, you, I think you know, I think you know. Okay, what is difference between pressure and stress? Pressure is just external body, like external force, like this is body, this is pressure. Like if this is this force P acting, and this is if you will compare, if you will break the component, it will like this and like this, then this P1 will this P1 will create compression. Wait for a minute. This P1 will create compression, sorry, pressure. But in stress, like we we can see, in stress it is internal resistance offered deformation, offered against deformation. Body, like let me read, body offering internal resistance offered against deformation. Okay, then clearly we can say that if there will be no deformation, there will be no force or no deformation, then there will be no stress. Actually stress is internal resisting force. Okay, लाइक आई एम, लाइक ऐसे समझ लो, मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ कि मैं तुमको एक थप्पड़ मार रहा हूँ। मैंने तुमको एक थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारा तो अगर मैंने जस्ट मारा तुम गिर गए, या मतलब मान लो तुम कागज़ होते, मान लो कि तुम कागज़ होते, तो मैं तुमको जस्ट मारता, मैं तुमको एक थप्पड़ धीरे से भी मारता तुम गिर जाते। अब मैं तुम लेकिन कागज़ तो तुम हो नहीं, अब तुम इंसान हो, मैं तुमको एक थप्पड़ मारूंगा तो तुम डिफॉर्म होगे। ओके, रेजिस्ट करोगे उसको। ऐसा तो होगा नहीं कि गिर जाओगे, एक थप्पड़ में गिर जाओगे। हाँ, बहुत कमज़ोर हुए तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली, मैं नॉर्मल पीपल की बात कर रहा हूँ। मैंने तुमको थप्पड़ मारा तो तुम थोड़ा रेजिस्ट करोगे, तो तुम्हारे गालों पे स्ट्रेस आएगा। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव गॉट माई पॉइंट। ओके, लाइक इन दिस, अगर यहाँ पे आपको कोई भी कहता है, इफ एनीवन सेज दैट व्हाट इज स्ट्रेस हेयर, then if there is no force, there is no stress. Like here example also, because it is also free, it is also for no force. ये रीज़न क्या है यहाँ पे स्ट्रेस के ना होने का? क्योंकि फोर्स ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्स है बट कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं है, कोई फिक्सिटी नहीं है, क्योंकि ये रिजिड बॉडी मोशन करने लगेगा, बिकॉज यहाँ फ्री है। अब इसको, अब ये पेन है मान लो, ठीक है, अब ये पेन है, अब पहले तो सिचुएशन ये मान लो कि यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था, कोई फोर्स नहीं लग रहा था तो कोई स्ट्रेस ही नहीं था, क्योंकि कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं था। अब मान लो मैं एक तरफ से फोर्स लगा भी रहा हूँ इसको, लेकिन ये देखो, ये दिस इज कॉल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट ना रिजिड बॉडी मोशन, दिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी मोशन, एंड इन रिजिड बॉडी मोशन नो स्ट्रेसेस विल डेवलप, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। लाइक क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्स लग रहा बट कोई रजिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, आगे से कोई रजिस्ट नहीं कर रहा। हाँ, अब ये कर दे कि यहाँ से भी फोर्स लगाएं, यहाँ से भी फोर्स लगाएं और इसको हम दबाएं, तो ये स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ फ्री है तो यहाँ भी कोई स्ट्रेस नहीं जनरेट होता, बट यहाँ क्या है कि इसको कोई रजिस्ट करने वाला ही नहीं है। ठीक है, रिजिड, ये भी यहाँ तो रिजिड बॉडी मोशन भी नहीं होगा। ओके, आई थिंक एनीवन वाज हैविंग डाउट अबाउट रिजिड बॉडी मोशन, इट मस्ट बी क्लियर हियर। ओके,
क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो रिजिड बॉडी मोशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ स्ट्रेस यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर रिजिड बॉडी मोशन हो रहा है बट स्ट्रेस यहाँ पर है। ओके, अब लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा क्योंकि ये इसको फिक्स है, ये इसको होल्ड करके रखेगा, यहाँ से खींचोगे तो यहाँ पे ये स्ट्रेस आएगा, तो यहाँ पे स्ट्रेस जीरो नहीं होगा। और स्ट्रेस, सबसे पहली बात, कोई भी कहे स्ट्रेस निकालने के लिए तो सबसे पहले कहीं स्ट्रेस निकालना है तो तुमको डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ स्ट्रेस निकालना है, ठीक है ना। स्ट्रेस अब कोई कह दे यहाँ निकालने के लिए, कोई भी कहीं भी कहे तो स्ट्रेस यहाँ निकालना है तो यहाँ पे सेक्शन कट करो, कहाँ कोई कहे यहाँ पर निकालना तो यहाँ सेक्शन कट करो। यू हैव टू कट द सेक्शन फॉर फाइंडिंग द स्ट्रेस। लाइक इफ अगर आपको कोई कहीं कहीं पूछता है कि स्ट्रेस निकालना है तो वहाँ पे कहाँ पे निकालना है, वहाँ पूछ के उससे कट करो। अगर वो कोई कह दे कि स्ट्रेस निकालना है, कहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, कोई बॉडी नहीं, बॉडी इधर है, आप सेक्शन इधर कट करो, तो अप्रोप्रिएट पॉइंट पे स्ट्रेस वो करना है, नहीं तो यहाँ तो स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये अब्सर्ड केस है। अब नॉर्मली हमने क्या रट रखा है, नॉर्मली हमने क्या रट रखा है फॉर्मूला जो है स्ट्रेस का, कि जो है पी सिग्मा इक्वल्स टू, क्या पढ़ते हैं हम, सिग्मा इक्वल्स टू पी बाई ए होता है। पी बाई होता है, पी क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है, वहाँ से उसको हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में जानना चाहिए कि होता क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पी इंटरनल, जो इंटरनल फोर्स लग रहा है, ओके, जो इंटरनल, जैसे यहाँ पे मान लो, अब यहाँ पे तुमने, यहाँ मान लो एक बॉडी थी, ठीक है, मान लो कि ये फिक्स ही हो गया होता, मान लो ये फिक्स हो गया तो यहाँ फोर्स लग रहा होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम सेक्शन कट करो, इस सेक्शन को मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इस सेक्शन को मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये पी, और ये इसका अंदर का पार्ट है, एक्स एक्स सेक्शन को जो हमने कट किया, तो ये पी, और ये इंटरनल है, इंटरनली लग रहा है तो पी इंटरनल, बट यहाँ पी इंटरनल इक्वल्स टू पी हो जाएगा। एक्चुअली ये रेजिस्टिंग फोर्स की वजह रहा, वो बात अलग है कि वो पी इन पी एक्सटर्नल के इक्वल हो गया, लेकिन हम डिफिनेशन ऐसे लिखेंगे, पी इंटरनल बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बट ये एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है नहीं स्ट्रेस का। तो कोई लोगों को लग रहा होगा नहीं मैंने तो यही पढ़ा है, ठीक है। तो वी फर्दर प्रोसीड, ओके, हम एग्जैक्ट डेफिनेशन पे आते हैं। अब जैसे कि अब देखो यहाँ एक दो एजम्पशंस और अपने क्लियर हो जाएंगे, वी शुड क्लियर द बेसिक एजम्पशंस ऑफ सोम। लाइक वी ऑलवेज अज्यूम in every subject, I think, in soil and here and there in structure, we always assume soil highway that is homogeneous, homogeneous homogeneous structure or homogeneous material में why we assume this why we assume the why we take assumptions, we have to know, always don't say that for, जो है कि हम हमेशा जो है किसी चीज़ को आसान करने के लिए, मैं किसी से पूछता हूँ कि किसी ने एजम्पशन क्यों लिया है, तो कहते हैं ईजी करने के लिए। अरे ईजी करना था तो सॉल्व ही नहीं किया होता, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ एजम्पशन होते भी हैं ऐसे कि आप इजी करने के लिए लेते हैं कैलकुलेशन को, बट आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि, क्योंकि गेट में और आजकल तो ईएससी का भी ट्रेंड ऐसा हो गया है कि उसमें जो है क्वेश्चन पूछते हैं वो एजम्पशन को ही चेंज करते हैं। तो यू शुड नो एजम्पशंस, कि एजम्पशंस का मतलब क्या है, अगर ये होता तो क्या होता, ये नहीं होता तो क्या होता, ओके। तो यहाँ से अपने ये चेक करेंगे कि अब होमोजीनियस हमने एज्यूम किया है, होमोजीनियस एज्यूम किया मतलब पहले क्या होती है, नॉर्मली बॉडी नॉन होमोजीनियस होती है, अपनी बॉडी नॉन होमोजीनियस है। वी हैव बोन, वी हैव बोन, वी हैव मीन्स आवर बॉडी इज ऑल्सो नॉन होमोजीनियस, bones, blood, etc way, and that in that way also every body, almost every body, homogeneous body I think is a ideal body that doesn't exist, but we assume that all bodies are homogeneous body in for calculation purpose. Why? Look here, like like this particle is different, okay, this particle is different, this particle is different if non-homogeneous, okay, non-homogeneous, this particle different, so different particles will offer different resistance, if they offer different resistance, then stress will be different at point to point, and it will vary point to point, here different stress, here different stress, here different stress, because they will offer different internal resistance. And what is stress? Stress is internal resistance offered against deformation. So if deformation is different, if resistance is different at different point, it will give different stress. So for this we take a limited area, means infinitely small area here,
Like here we study in limit dA tends to 0, dP in this in means internal, means is for small area we take on how much this is this resistance is offering. Okay, that is called, for a small area, that is called sigma. And for when we integrate it, we will get this formula. Okay, sigma equals to P internal by AC. If anyone asks you what is stress, and look, if interviewer asks you, you have to say this, not this formula, because that he know that you are, तुमने ये रट्टा मार लिया है, ठीक है. लेकिन बट हाँ, नॉर्मली कोई ऐसे पूछ रहा है, कोई अब बीटेक में नहीं पढ़ रखा है या कोई पूछ रहा है, तो जस्ट क्वेश्चन के लिए तो हम ये यूज़ कर लेते हैं, उसको बता देंगे, किसी को समझाना है. एक होते थे ना अपने कॉलेज में भी बैक वाले बच्चे क्या, मेरी भी खुद की बैक थी. मतलब कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है कि इसको यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं. किसी को समझाना हो, जस्ट जैसे कि किसी को कल एग्ज़ाम हो, आज बताना है उसको कि क्या है स्टेज, तो भाई ये फार्मूला लगा के चला, ये फार्मूला लगा के चलाएगा तो तेरा क्वेश्चन बन जाएगा. बट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज दिस इज करेक्ट आंसर. ओके, दिस कन्फ्यूज़न आई विल, इसको मैं बाद में बताऊंगा, जब किसी को आएगा तो बताऊंगा. अब लोग स्टेज are of two types. States are of two type normally. Normal stage, shear stage. Norm Normal stages are also two types. Direct normal stage, bending normal stage. Actually direct normal stage due to direct force like tension, compression. Okay, like axial force. It may be axial or non-axial, but sorry, it should be axial. Direct normal stage, like this will give direct normal stage. Okay, direct normal stage, this may be tension, this may be compression. Okay, so you got direct normal stage. Of bending normal stage due to bending, as we know, that simply supported beam like this, if loading is acting, then upper part compression, lower part tension. This is also normal stage, but this is caused due to bending of beam. Okay, due to we have to bend it. Okay, we have to bend it, so that's why it is called bending normal stage. It is also normal stage. It is also type of normal stage, but it is caused due to bending. And why normal stage? Normal stage because it is acting normal to the surface, normal to the cross section area. Okay, now second part is shear stress. Shear stress, what is shear stress? Shear stress is also of two type: direct shear stress and torsional shear stress. Direct shear stress, due to direct forces, due to